जानना चाहता था, फंडिंग, इन्वेस्टर, क्योंकि अभी जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, दे वांट टू गेट टू नो कि ये कैसे शुरू होता है, बिकॉज कैपिटल इन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये सबके मन में बहुत बड़ा मिथ है यार, जब कैपिटल ही नहीं तो हाउ वी विल स्टार्ट, एंड नाउ द फंडिंग एवरीबडी इज अवेयर ऑफ, लेकिन कैसे अप्रोच करना है, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म और हाउ, बिकॉज आप वहां पहुंचे हो, यू कैन टेल योर विजन, बट वो जर्नी वहां तक पहुंचना ना, बहुत सारे मिथ्स हैं, और वहां करेक्ट वे से कैसे पहुंचना है, और ये फंडिंग किस स्टेज पे आपको लेनी चाहिए, बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक, ये नहीं है कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया मैं कल फंडिंग के लिए, तो वो क्या सही टाइम है फंडिंग के लिए, और क्या सही प्रोसीजर है थ्रू विच यू go through and get the funding, and how you judge the investors as well, that because basically it's a collaboration, right? So it should be like from your say as well कि इस बंदे के साथ यार मैं काम करना चाहता हूँ, that's why you are taking his or her money, right? So what's all, how you break down this thing? So I think for every startup they have to think when is the right time to go for funding. Many startups they can do without funding also. Many startups can't even go to the next stage without funding. Like if someone is in drone technology, to create a prototype you need funds, and so many startups are capital intensive, so they need fund. But if you can bootstrap, if you can find a way to get around funding, then you should try it. बेसिकली जो मैं भी यही मानता हूँ, जब तक बूटस्ट्रैप हो सकता है बूटस्ट्रैप करो, राइट, व्हेन इट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर द फंडिंग एंड यू रियली आर क्लियर अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड, राइट, देन यू शुड गो. इज इट करेक्ट वे ऑफ लाइक इंटरप्रिटेशन? राइट, ऑफ कोर्स. अगर आपको अब लगता है कि you have to jump 10x 20x and for that you need funding, और या फिर आपने प्रोटोटाइप को बिल्ड किया and you are like this is working really Production well, start and now I need to expand, so you can seek for funding. Now funding seek करने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं. So if you are at an early stage, a very early stage, you will be going for pre-seed round, and there you will be looking after angel investors, family and friends, you can look for some grants, government grants या फिर university grants वगैरह, that you can look after, and and then you can you should fundamentally you should have a pitch deck, financial modeling, how you are going to spend the money, and what goals are you going to achieve by spending that money, so right. I would recommend for your audience, there is a pitch deck template by Ratan Tata and NASSCOM. You can find it online. You can also look after pitch deck of Airbnb, Uber, etc. For examples, what are the kind of things that you have to add. Pitch deck shouldn't be very lengthy. Many people do this. That's the thing, that they add too many things in pitch deck. Too many slides. But pitch deck are generally 15 slides. And it's very straightforward. It talks about problem, solution, what are you building, what's the competition, what's the revenue streams, what's the progress till date, etc., what's the team, etc. So it's very straightforward. Pitch deck is a process which helps you also better conceptualize your business. So it might be that you think that मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, and you might want to include all of those things in a pitch deck, but then you will start thinking that it's very confusing. Basically, you're saying concrete, right? It should be like very much like they should relatable and achievable,
है ना? Right. इट शुड नॉट बी लाइक कि ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा और उन्हें लगे यार एंड में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और कहीं ना कहीं जब आप उसे आप पिच डेक को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो आपके खुद के भी माइंड में क्लैरिटी आती है कि यार ओके, दिस इज हाउ आई शुड डिफाइन माई बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन योर स्टार्टअप, यू नो, देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स जहां पे बोलते हैं कि यू नो डिफाइन योर स्टार्टअप्स इन 50 कैरेक्टर्स। ओके ओके अब वहां पे लिमिटेशन आ गया कि 50 कैरेक्टर्स बोल दिया, यू नो। फिर आता है कि डिफाइन योर स्टार्टअप इन 4 लाइन्स। फिर आएगा डिफाइन योर स्टार्टअप इन 250 वर्ड्स, यू नो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्टार्टअप को 50 कैरेक्टर्स में भी डिफाइन करना आना चाहिए, 4 लाइन में भी डिफाइन करना आना चाहिए, और एक लेंथी डेफिनेशन भी होना चाहिए कि व्हाट आई मीन, you know, what am I really building, ओके you know. And you know, we start with why of this startup, क्यों कर रहे हैं, you know. Then you go for how,